फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Text. मैं हूं सौम्य कपूर and India have started off their T20 World Cup 2024 campaign on a winning note. They defeated Ireland by 8 wickets. 97 का टारगेट चेस कर रहे थे. टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था. रोहित शर्मा played a brilliant knock. He scored an unbeaten 50 before getting retired. Hurt. इसके बारे में थोड़े विस्तार से बात करेंगे बाद में. But on the other hand, it was Rishabh Pant who played a brilliant knock again. He remained not out for 36 of 26 deliveries, scored a couple of sixes and 3 boundaries. Well, to talk about this match, I will start with the Indian bowling unit because as you can see, the scorecard of the Ireland batters, Andrew Balbirnie just managed to score 5 of 10. Paul Stirling, the captain, was out for 2 of 6. Arshdeep got rid of him very early in the match, and that certainly एक उन्होंने कहीं ना कहीं एक हेल्प किया उस कोलैप्स में, और एक जल्दी जो विकेट उन्होंने निकाली, ही लेड द फाउंडेशन. उसके बाद लॉकन टकर, the wicketkeeper batter, was cleaned up by Hardik Pandya. It was a brilliant delivery from the medium pacer, just snipped into the right-hander a bit and middle stump को उसने uproot किया. He was out for 10 of 13. Harry Tector was out for 4 of 16. Curtis Camphor 12 of 8. George Dockrell caught by Bumrah, bowled by Siraj for 3 of 5. उसके बाद थोड़ा सा एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश ज़रूर करी. Garrett Delany tried to hold on to one end, but he was run out for 26 of 14. वो last wicket ज़रूर थे, but in the tally he could manage 26 of 14. उसके अलावा Mark Adair was out for 3. Barry McCarthy didn't open his account. He played 6 deliveries. So Joshua Little was cleaned up by Bumrah, and Benjamin White was not out for 2 of 4. तो कहीं ना कहीं Indian bowlers ने एक दमखम दिखाया. They showed their class, especially Arshdeep, who laid the foundation of this collapse. So while Hardik Pandya, the other man in this picture, he was on song. He was just brutal with his bowling, bowled brilliantly. I'll just read out the figures, bowling figures of all the bowlers for India. So starting with Arshdeep, he bowled 4 overs, gave away 35 runs. Was hit for some runs in the later stage of his spell. Managed to pick up 2 wickets, but bowled 9 wides. That has been his problem. So control कहीं ना कहीं अभी भी Arshdeep का एक problem है, which can be problematic for the Indian team in the coming matches, especially against the next one. We are playing against Pakistan on 9th of June on Sunday in New York itself. So कहीं ना कहीं वो कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे वो मैच है वो भी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं. वहाँ पर बारिश होने का भी थोड़ा सा चांसेस है, प्रेडिक्शन है. तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल की जहाँ तक बात है अर्शदीप के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ही बोल्ड रियली वेल इन द फर्स्ट 2 ओवर्स, बट उसके बाद कहीं ना कहीं लाइन लेंथ थोड़ा बिगड़ गया. वहीं मोहम्मद सिराज लुक ब्रिलियंट. ही बोल्ड 3 overs 13 for 1. He rattled the batting unit of the Ireland side with that mean outswinger, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं. उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, who was a first change, he came in as a first change bowler. He bowled 3 overs 1 maiden, just gave away 6, picked up 2 wickets. So Bumrah is looking in decent touch. कहीं ना कहीं थोड़ा सा और the Bumrah kind of effect लाने की अभी शायद ज़रूरत है. But again, that's the first game. He's still getting into that groove. He will eventually will be there, sooner or later. Coming to Hardik Pandya, 4 overs 1 maiden. In fact, Bumrah too bowled a maiden. He gave away 27, but picked up 3 wickets. Akshar Patel, just 1 over. He bowled. He gave away 3 and also picked up a wicket. It was good catch. Cotton bowled. He dismissed someone like Barry McCarthy, जिनके बाद तो बहुत लंबी पारी चल नहीं पाई. सो एक अच्छा कैच लिया डाइविंग टुवर्ड्स हिज राइट. उसके अलावा रविंद्र जडेजा बोल्ड 1 over. He gave away 7 and didn't really pick up any wickets. So उसके बाद जो जलवा दिखाया वो दिखाया this man on your screen, Rohit Sharma. Virat Kohli was out very early in this chase. He was not looking
as good, as comfortable in that run chase जितना वो दिखते हैं. Of course, Yashasvi wasn't there in this for this game. So Rohit and Virat ने open किया. Virat was out for just 1 in 5 deliveries. He tried to take on Mark Adair, but miscue किया shot को, leading edge लगा, and he was caught by Benjamin on the third man region. उसके अलावा रोहित शर्मा, he scored 52 of 37. He retired hurt क्योंकि एक बॉल थोड़ा सा उनके कंधे को हिट करता हुआ गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज इनिंग्स, जो बाद में थोड़ा ज़्यादा शायद एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिसाइड किया कि दैट he'll retire hurt and go back to the dressing room and won't take more part in this run chase in this match. 50 ज़रूर करी, अनबीटन गए, रिटायर्ड हर्ट हुए. उसके अलावा 4000 रन पूरे करे, 1000 रन T20 वर्ल्ड कप में पूरे करे. सूर्य कुमार यादव was the one who came in at number 4, but again Surya's problem has been he's not really that patient. Again, he went for his stroke. Benjamin के against was caught by Dockrell around that long on area for just 2. उसके बाद शिवम दुबे was the one who came in at number 5. बट उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 बॉल खेली उन्होंने. ही वॉज नॉट आउट फॉर 0 और ऋषभ पंत के एक रिवर्स स्कूप ने मैच को ख़त्म कर दिया. ही रिमेन्ड अनबीटन एट 36 of 26. तो एक नॉट सो ईजी रन चेज आई वुड से. बिकॉज ईजी क्यों नहीं था ये रन चेज, क्योंकि जो पिच था वो बहुत हरकत कर रहा था दोनों ही इनिंग्स में. इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी रिस्की ट्रैक. बाउंस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो पा रहा था. इट वॉज एन अनइवन बाउंस. एक बार ऋषभ पंत को भी एल्बो पे लगी इन वन ऑफ द ओवर्स, तो ही कंटिन्यूड टू प्ले. ही डिडंट वॉक बैक टू द ड्रेसिंग रूम. बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा डेंजरस हो गया है अब प्लेयर्स के लिए. एंड द अथॉरिटीज, द कंसर्न अथॉरिटीज रियली नीड टू टेक नोट ऑफ दिस. वेल, talking about the game, India, as I said, India have won the game by 8 wickets. Rohit Sharma and the bowlers have just demolished Ireland to take those opening 2 points in the tournament, in the competition. Well, that's it from this update, but you keep following us on our social media handles, Instagram, Facebook and Twitter, and do subscribe to our Cricket Next YouTube channel, क्योंकि cricket मतलब cricket next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.